was the first scientist who explained the quantitatively the hydrogen spectrum. Though this theory is not modern, but it is used to rationalize various points. It is used to explain the spectrum of hydrogen atom. Let us discuss the Bohr's atomic model for hydrogen atom. Bohr's atomic model for hydrogen atom, proposed by Niels Bohr in 1930. The next one, though the theory is not modern, but it is used to rationalize many points. We will discuss the postulates of Bohr's atomic model. नील्स बोर्स ने, हमने इससे पहले पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने देखा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ड्रॉबैक था, गड़बड़ियां थी। क्या गड़बड़ियां थी? कि वो स्टेबिलिटी को, एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। देन आफ्टर दैट बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज पुट फॉरवर्डेड बाय नील्स बोर्स इन 1930। ये थ्योरी मॉडर्न नहीं है। अभी तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे बेस्ड वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए हम बोर्स एटॉमिक मॉडल का सहयोग लेते हैं। इसलिए थ्योरी जो है हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम बढ़ेंगे, बोर्स के वेरियस पॉस्टुलेट थे, क्या क्या उनके पॉस्टुलेट्स थे, वन बाय वन हम पढ़ेंगे और ये भी देख लेंगे कि वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे हेल्पफुल है। पहला पॉस्टुलेट था बोर्स का, दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड energy levels, that we call it as orbit or cells or energy state which have a fixed radius. The first postulate which we have, the electrons are revolving around the nucleus in fixed circular radius, circular path having fixed radius. Having fixed radius. To the next, this which is known as orbit or energy state, orbit, energy state, or we can say state or stationary state. Stationary state. This orbit, energy states or stationary states, they form concentric circles. These energy states
energy state forms concentric circle. What it means? इसका क्या मतलब है? वो उसका पहला पोस्टुलेट था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस क्या हो, फिक्स हो, उसमें मूव करता है। इस सर्कुलर ऑर्बिट को, पाथ को, सर्कल को ऑर्बिट कहते हैं या स्टेशनरी स्टेट कहते हैं या अलाउड एनर्जी स्टेट कहते हैं। तो ये जो एनर्जी स्टेट होंगे दे फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल। देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था वो उसका? नेक्स्ट पोस्टुलेट था कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट देन it will not radiate energy. It means then its energy is fixed. अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी का कंटेंट फिक्स रहेगा, उसकी एनर्जी घटेगी नहीं। Whereas if it get, इसमें जो रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन अगर रिक्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है तो वो इस एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक जंप कर सकता है और फिर वो उतनी ही एनर्जी रेडिएट करके उस हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ सकता है। इट मीन्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit is fixed. It means it does not radiate energy, but it will move, it will jump to higher energy state by obtaining requested amount of energy and also de-excite to lower energy state by releasing that much amount of energy. What it means? अगर इलेक्ट्रॉन यहां है और अगर इसमें और इस n=1 में और n=2 में अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है तो ये इलेक्ट्रॉन अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पाएगा तो वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, उससे कम पाएगा तो नहीं जा सकता। तो मतलब 13.6 वोल्ट एनर्जी से कम पाएगा, तो इसलिए हमने कहा है कि रिक्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिफिनेट एनर्जी चाहिए उसको, उससे कम एनर्जी मिलेगी तो वो कभी एक्साइट नहीं हो सकता। और जब फिर उस एनर्जी से डी एक्साइट होगा तो फिर उतनी ही एनर्जी को वो रेडिएट करेगा। तो सेकेंड पोस्टुलेट है कि किसी भी दिए गए ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करेगी, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन जब वो एक डिफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ऑब्टेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा,
तो वह हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है और फिर उतनी ही एनर्जी रेडिएट करके वो फिर से ग्राउंड स्टेट में चला आएगा. We will move to the next postulate. When transition occurs from one energy state to another energy state, then energy is emitted and the frequency of that emitted radiation is given by delta E by H. That mu is termed as Bohr's frequency. We will come to the next postulate, that the third one. The frequency of radiation observed or emitted when transition occur between two energy या two stationary state. Then the frequency of radiation observed or emitted when transition occur between the two stationary states is given by, E equals to H mu. It means energy, mu is frequency, H is known as Planck's constant. Then we will get the expression of frequency is equals to, this one is delta H, delta E by H, where delta E equals to E2 minus E1. It means these are the energy of the energy state or the orbit within which transition is occurring there. The next we have the angular momentum of the electron in an orbit. It means the angular momentum of an electron in an stationary state is represented as MEVR. This one is the momentum into R, circular path. It is equals to NH upon 2 pi, where M is known as mass of electron, V is known as velocity of electron, and R is radius of orbit, and we will discuss n equals to 1, 2, 3, 4, and is also known as principal quantum number. What we see here, the angular momentum of an electron is integral multiple of a definite value, that is h upon 2 pi. Here what we can write 1, 2, 3, 4. It means when a definite amount of energy is multiplied by 1, 2, 3 and 4, then we've got what? The angular momentum. It means all the energies are not allowed. Only the energy level of definite energy, which is the integral multiple of h upon 2 pi, is allowed, in which the electrons is revolving.
Why it is so, we will study in higher classes. We have discussed the angular momentum of electron. हमने देखा कि जो जब ट्रांजिशन होगा इट मींस ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है. जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा या एक्साइट होगा, तो एक्साइट होते हुए भी जो एनर्जी निकालेगा दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई. और जब डी एक्साइट होगा तो भी जो एनर्जी वो छोड़ेगा, ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये एनर्जी निकालेगा. इट मींस दिस ई इज इक्वल्स टू दिस ई. ये दोनों एनर्जी का कंटेंट इक्वल है एंड वी नो ई इक्वल्स टू एच म्यू. एच म्यू इट मींस what we have, mu equals to E by H. Mu equals to E by H. This mu is known as Bohr's frequency. This is known as Bohr's frequency. So next we have angular momentum of electron. We represent the angular momentum by mvr because it is in a circular path, which is equals to the integral multiple of h upon 2 pi when n equals to 1, 2, 3, 4 and so on. So the next, now we will discuss certain information regarding Bohr's atomic model, such as atomic radius, energy states, or atomic radius, energy of the electron in various orbitals. So first one we will discuss. What that the first one is known as the energy state. Energy state that we also called as an orbit of an electron energy state or orbit of an electron is known as principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number. And is represented by n, which is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. It means the orbit in hydrogen atom is represented by principal quantum number. It is also known as energy state and it is represented by n equals to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. To the next, we will discuss about the radius of this energy state or orbit, which is represented by r equals to a naught n square, where r is the radius of nth orbit, a naught is a constant and n square it is termed as principal quantum number. What we have? The second one, the radii of energy state is represented by the following equation. That is Rn equals to A naught n square, where Rn is radius of nth orbit. A naught is constant, which is equals to 52.9 picometer. N is principal quantum number. By this equation, we also know
when principal quantum number increases from first cell to second cell, then the radius increases. What we have? It means the next one, if n equals to 1 for first orbit, what we have? R1 equals to A naught 1 square. It is equals to A naught. It is also equals to 52.9 picometer. It is known as Bohr's radius. To the next, we have also discussed when the principal quantum number increases, then the radius of nth orbit increases. It means the electron will present away from the nucleus. It means when n increases, n means principal quantum number, then radius increases and electron is present away from the nucleus. Away from the nucleus. This is all which we have discussed about the energy, radius. To the next, we will discuss about the energy of the electron in nth orbit. The next one, the energy of electron or the energy of the energy state, the energy of an stationary state, where electron is present, is represented by EM. It means energy of nth state. It is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 1 by n square. That is in the form unit it has joule. It means it is also represented as what we have, En equals to what we have, minus